તો કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કોવિડ રાહત પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। મહત્વના સમાચાર કહી શકાય તેવા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। આરોગ્ય સુવિધા માટે 50,000 કરોડ રૂપિયાની રાહત પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। દેશમાં આરોગ્ય સુવિધા વધારવામાં આવશે, જે અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કોવિડ રાહત પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી, જેમાં 50,000 કરોડ રૂપિયા આરોગ્ય સુવિધા માટે ફાળવવામાં આવ્યા। तो देश में आरोग्य सुविधा में वधारो करवामां आवशे। केंद्र सरकार तरफथी कोविड राहत पेकेजनी जाहेरात करवामां आवी, ते अंतर्गत आरोग्य सुविधा माटे 50,000 करोड़ रूपिया फाळववामां आवशे। कोरोनानी जे महामारी छे, जेमां घणा बधा लोको सपड़ाया हता, घणा बधा परिवारजनोए तेमना घरना सभ्यो गुमाव्या छे, तेने ध्यानमां राखीने केंद्र सरकार तरफथी कोविड राहत पैकेजनी जाहेरात करवामां आवी। Through the MFIs, microfinance institutions, we aim to reach out to 25 lakh persons who are absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual, and the rate will be at least 2% below the maximum rate which is prescribed by the RBI. So the focus of this will be on new lending and not on repayment of old loans. Clearly, all kinds of stressed accounts can also benefit from it, and that is why we have mentioned that all defaulters also, so long as they are 89 days or less, meaning if the default is only within the 89 days, even they get covered, which means only the NPAs will not be covered, stressed will also be covered. Now, this entire scheme will be till 31st March 2020, or till such a time the 7,500 crores of guarantee which is getting issued is exhausted. Either this or that, whichever is the earliest. The guarantee which is being given is up to 75% of the default amount, and this duration is for 3 years. The loan duration is for 3 years. So we hope to cover 25 lakh, the smallest of small MFI clients, which means MFIs are normally widely spread in the hinterland, which is really the smallest, towns, very small towns, and therefore we want to reach out to them, and that is best done through the MFI, and that is why we've taken this route. So there will be a joint lending group kind of a framework wherein the NBFC, which has a link with them, the MFI, will all be in the loop. But that is how we expect to reach the smallest of small borrowers. They could borrow it for any one of the purposes for which they would like to take money from the MFI. क्रेडिट गारंटी स्कीम ये बिल्कुल नई योजना आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिल सकता है, और लगभग 25 लाख जो छोटे कर्जदाता हैं, उधारकर्ता हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसकी जो कैपिंग की गई है ऋण की, वो लोन फ्रॉम बैंक्स, उसको कैप किया गया MCLR प्लस 2%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। RBI की गाइडलाइंस जो निर्धारित हैं उसके अनुसार ही इंटरेस्ट रेट 2% कम होगा, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब रेट से कम होगा, निर्धारित रेट से 2% कम होगा। तो इससे भी उधारकर्ताओं को लाभ मिलेगा, और इसकी जो समय अवधि है वो 3 वर्ष की होगी। मैक्सिमम लोन जो टेन्योर है, इसका समय सीमा मैक्सिमम 3 वर्ष की होगी, और 80% सहायता जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को वृद्धिशील उधार देने के लिए करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल लेंडिंग के लिए करनी पड़ेगी, ये उसमें कहा गया है। और ये जो कर उधारकर्ताओं को दिया जाएगा, ये बिल्कुल RBI गाइडलाइंस के अनुसार होगा।
जैसे लेंडर्स के लिए जो गाइडलाइंस है, बोरोवर्स के लिए जो गाइडलाइन है जेएलजी के अंतर्गत। તો દેશમાં આરોગ્ય સુવિધા વધારવામાં આવશે। આરોગ્ય સુવિધા માટે 50,000 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવશે। કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કોવિડ રાહત પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી છે।